वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है शुभम ने और वीडियो का टाइटल है एक्सप्लोरिंग दादर विद एक्टर मिथाली पालकर एंड कामिया जानी। तेरी गली में सीजन 3 एपिसोड 3 कर डिटेल्स। वेल काफी टाइम हो गया हम लोग पहले ये बताएं बस ये क्यों क्योंकि सीजन 3 का एपिसोड 3 हम देख रहे हैं इसलिए। लेकिन तो आपको क्या लगा जी मैं क्यों हंसी हूँ? मुझे लगा शायद वैसी हंसी है जी नहीं, इसको लग रहा होगा कि मैंने कुछ पता नहीं इसकी बात पकड़ी है, ये कुछ गलत कर गया होगा मुझे लगता है। मैं भी हो सकता है। Anyway guys, हम लोगों ने फूड से रिलेटेड वीडियो काफी टाइम हो गया था नहीं देखी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आज ये वीडियो देख लेते हैं और वीडियो का टाइटल मौसम ने बता दिया है। लेकिन वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके बाद ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वाह मजा आ रहा है लोकल मार्केट है ना। Mithila, look! How fast are you walking? Arey, with this speed we'll not be able to finish Dadar, yaar. Come. तो बड़ा मुश्किल होता है क्या इतने फास्ट बंदे के साथ चलना। If you want to get the true essence of Maharashtra in Mumbai, मतलब पूरी तरह से अगर Maharashtrian feels लेनी हो, there is no better place than Dadar. दादर स्टेशन भी है ना शायद। I am at Shivaji Park. आई हूँ आज तेरे गली में to explore the little things of Dadar with Dadar सी मुल्की who's been living here since her childhood with her grandparents. Joining me today on the show is Netflix star and a popular actor Mithila Palkar. Are you? I'm very good. How are you? Very good. I'm खूपच छान दिसते तू आणि तुझ्या दादर. How's my Marathi? I'm very impressed. Very impressed. But welcome. Thank you. We are going to be exploring her gully today, and as you can see, Dadar's gully is actually quite different than the rest of Mumbai. Where else do you get to see these green bylanes with so much shade? That is true. I'm just very happy that Dadar has managed to maintain its old world charm a little bit. What is it that you like so much about Dadar that you actually moved to your grandparents' house and been living with them since childhood? Well, I think I identified with this place since I was born, I think. I just knew it intuitively that this is where I want to be. And I love living with my grandparents. I think my grandparents is what I associate with Dadar the most. You are amongst those lucky ones who can get away easily while talking to Havaldar, police, any trouble you have, Zaudya now. These are people love. This is good enough. Yeah, this helps me escape every time I break any rule. So, Mithila, I have not eaten anything since morning. Good. And I'm quite looking forward to eating some Maharashtrian delicacies. Is that all we are going to eat today, and what all are we doing? We are going to take you to some very special places of Dadar. So the first place I'm going to take you to is called Prakash. Okay. Where we are going to eat sabudana vada and kothimir तो vada. हम लोगों ने देखा हुआ है। What are these humongous dabbas? I see here. This is Vaibhav Caterers. They've been also around for many years. Like my great grandfather के वक्त से they've been around. So it's been a while actually. Since we Quite intrigued by the utensils they use. Everything is all old school. Like even the cradle over there is Yeah. old school. Yeah. कितने प्यारे हैं ना ये। So another funny thing about having grown up over here is that most of these lanes have their own names. So when you're actually writing their addresses, you don't know what they are. So for instance, the lane we are in is called Gas Gully. Gas Gully. Gas Gully because the gas service station is here in this lane. Oh. Except I don't know
what it's called really. Like it's not its official name. I can't say Gas Gully in like an official document. And will Google Map show it? No. Then it's legit. Then it's legit. It's only legit according to Dadar. प्रकाश रेस्टोरेंट मुंबई के कुछ आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स में से एक है जिन्होंने 1971 में एक चाय के स्टॉल से शुरुआत की थी और आज वो दादर की गलियों में अपनी महाराष्ट्रन डिशेस के लिए बहुत ही फेमस है। This looks like a really old restaurant. It is. It's going to complete 50 years this year. Okay. It used to actually be located down this road, but because there are so many redevelopments happening, they've moved it here for a few years now. And their first outlet was in Girgaon. Okay. And this is their second one, which is now 50 years old. Do you remember coming here as a child with your grandparents? I do. My father loves all of these places. So every time he visits from Vasai or used to visit from Vasai, we used to make a trip. So you are coming here after really long. After very long actually, and my mouth is already watering as I So speak. what are we eating? We are going to feed Kamiya some very very interesting Maharashtrian dishes. This is Dada, order do साबुदाणा वडा, कोथिंबीर वडी आणि मिसळ. We have a lot of Maharashtrian delicacies right here. Mithila, what is all this? Tell me. So this is misal. The speciality about misal, Prakash, is that their misal is so popular that they don't serve it with pav. They're like they just eat the misal. It's very Atmanirbhar without pav. Yes. And you pronounce it as misal. Misal. But it's spelled as misal, right? Yeah, but when you write it in Marathi, it's misal. Misal. Okay, misal. Okay, and what's And this? this is kothimir vadi, which I know you haven't had ever Never had it before. Seeing it for the first I'm time. very excited for you to have it. Okay. And this, of course, is sabudana vada. This I've had. So you decide what you want to start with. I have never tried this, so definitely the kothambir vadi. And you got to dip it in the sauce. I'm going So to it's really good, huh? It is. It's like a better version of bread pakoda. Very good. I've never heard anyone compare kothimir vadi to bread pakoda, but I'm going to go dive right into the misal. Bringing back all your childhood memories. Still the same. So from what I know, your granddad wasn't exactly excited about you becoming an actor. No, he wasn't. Also, you see where I'm coming from. Yeah. So, like, it's such a humble space to come from that for him, there was no, or for any of us as a family, we never had that kind of an exposure of the film industry. We didn't know what it would entail to be there. Yeah. And generally, for an outsider for the longest time, the film industry wasn't exactly the safest place to be. Because I lived with my grandparents, for me it was very important for my grandparents to be on my side. Yeah. Because I knew my parents would be okay with whatever I choose to do. How old is he? He's 93. Amazing. And he would have actually seen the landscape of Dadar changing, right? Both your grandparents. Yeah, both of them. So my nani, like I told you earlier, tells us that, you know, हमारे building के terrace से जब आप देखते थे तभी तो शिवसेना भवन दिखता था, because शिवसेना भवन that time used to be the tallest building in Dadar. And now it's all hidden behind tall buildings. So yeah. मैं सोच रही थी The कि vada मतलब क्या बिल्डिंग हो सकती And the misal is amazing. Of course, I've already told you what I think about the kothambir vadi. That was a good meal. We polished off everything. अब बाकी के दिन के लिए जगह है ही नहीं. But it is a hot day. I don't mind drinking something. Okay, so chalo, I'll make you taste a very special drink actually. I'll not tell you about it. I'll make you taste. So the best way to travel in Dadar is a खाली पीली, क्योंकि पार्किंग का स्ट्रेस नहीं है और गाड़ी छोड़ सकते हैं जब चाहिए तब.
एक बड़ी जगह है ना। अब दादर स्टेशन के पास में ही है और एक पॉपुलर जॉइंट जो है पंशिकर, जो अपने महाराष्ट्रन स्नैक्स और स्वीट्स के लिए जाने जाते हैं और आज के टाइम में उनकी 4th जनरेशन ये रेस्टोरेंट को संभाल रही है। बहुत जनरेशन। राजस, आज मला काम्याला एक ड्रिंक इंट्रोड्यूस करायचं आहे. आपल्याकडे पियुष मिळतं ना, सो तिने कधीच पियुष प्यायले नाहीये ती, त्यामुळे आपण पियुष प्यायला घालणार आहोत तिला. आणि तिने कधीच खरवस खाल्लं नाही, मैंगो लग रहा है बस. त्यामुळे आपण खरवस सुद्धा खायला लावणार आहोत तिला. मला ट्राय करायचं आहे ते. थँक यू. दिस इज पीयूष. सो दिस इज पियुष, दॅट इज खरवस. लेट्स डू दिस. नॉट बैड. नॉट बैड. नॉट बैड. यहाँ तो नहीं आती थी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ. ओह गॉड, मेरे सीक्रेट. This tastes a lot like Shrikhand. It is. It's a less viscous version of Shrikhand. Yes. ये आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम तो नहीं है. After all that spicy food that we had, this is all that I needed. फिर मीठा। Tell me if you ever were to buy a house, and I'm sure you would have plans. Where do you plan to buy a house? No prizes for guessing. It has to be Dadar. Dadar, Mahi, Matunga, somewhere around this area. My grandparents would also want me to go too far away from them. So yeah. I like Piyush. I'm glad you do. It sounds like a boy's name, but No, Piyush, you're not the one we're talking about. This is the Piyush. so I'm now going to test your love for Dadar by how much you know your neighborhood. So the first one, okay? Dadar station is the busiest station in Mumbai. We all know that. So how many visitors does it get daily? But this is, I'm talking about the pre-COVID stage. Is it 2 lakh visitors daily? Is it 5 lakh visitors daily? Or is it 3.5 lakh visitors? कितने होंगे मालूम? It's an approximate That's number. very specific. But I'd say 3.5. No. 5 lakhs. Yes. Really? I wanted to be humble about it, but clearly not. You know, there's this joke. डर के आगे जीत है, दादर के आगे सीट है. That is correct. Okay. That is correct. Dadar was first to originate this local food. Tell me which one Vada is it? pav. Oh, you don't even need options. Very good. We'll be visiting that place too. Okay. Ashok Vada Pav is said to be the first place where Vada Pav was ये तो हमने originally वड़ा पाव- started by this guy. Okay, I'm going to give you some names. You have to tell me which one's the correct one. Is it Ashok Savan, Ashok Vaidya, or Ashok Kulkarni? Very good. You know Dadar well. Okay, this is one of the most famous colonies of Dadar. Is it Dadar Social Colony? Parsi colony. That Parsi colony. Simple questions I got for you. I thought मतलब मेरा तो sweat निकल जाएगा. Okay, this is the oldest and the biggest markets of Dadar. Is it the Food Dadar? market. Yes. Very good. It's Okay. right here. Oh, the flower market is here? Okay, we'll pass Right by here, that no? place. हाँ. Okay, we are at Panchikar and you have to tell me which year was Panchikar started in, okay? Is it 1946, 1931 or 1976? 1931. Another thing Dadar is really known for is the Ganesh Chaturthi that is celebrated here. And I remember even though I used to live in Chembur, this used to be the hub और विसर्जन के टाइम पे यहाँ कंपटीशन होता था. हाँ, Between- वो तो अभी भी होता है और मतलब ऑफ कोर्स नॉट इन द पैंडेमिक वर्ल्ड बट आई फील लाइक और हम ये हमेशा कहते हैं कि दिवाली हो कोई भी फेस्टिवल हो ऑल द शॉपिंग दैट हैपेंस इन दादर इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक ये सारा सामान और कहीं मिलता ही नहीं है सो या दैट्स द ब्यूटी ऑफ दादर बट लेट्स गो सी माय स्कूल नाउ Let's go. इसके बारे में नहीं बताया था क्या खा रहे थे पढ़ा. ये मेरा फेवरेट कॉर्नर. मुझे मार्केट विजिट करना अच्छा लगता है. कपड़ों वाली। मुझे अच्छा लगती है ऐसी लोकल मार्केट विजिट करना. अभी बस बड़े ऑप्शंस हो जाते हैं चीजें ढूंढनी.
ओके एंड यहाँ पे पहले जब मैं स्कूल जाती थी तो वैसा हुआ करता था कि सुबह वाली बैच इंग्लिश मीडियम हुआ करती थी, सो माइन वाज IS मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, और दोपहर वाली बैच मराठी मीडियम हुआ करती थी नाबर गुरुजी। Now this is the best part of this side of the town. दादर चौक The पार्क। sea, sun and sand. Sun तो आज हमने बहुत enjoy की है. बहुत ही ज़्यादा। But this view is spectacular. Do you come here often, Mithila? बचपन में बहुत ज़्यादा आते थे, मेरे नानी के साथ में और मेरी बहन आते थे, and we used to come here, build sand castles, do all the things that you do at the beach. But बहुत सालों बाद, thanks to you actually, I'm here now. I hadn't come here in a while. But this Dadar girl once wanted to go to college in Bandra. What was the obsession? Because once वो दादर से थोड़ा दूर जाने का चस्का लग जाता है ना कि you know your college is far away, वो बहाने बनाते हैं हम कि अच्छा लेट हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक है, बस ही नहीं मिल रही, ये वाले बहाने तुम जब तुम्हारा कॉलेज वॉकिंग डिस्टेंस है वो सब नहीं बना सकते हो। तो बिल्कुल नहीं चाहिए था मुझे कीर्ति कॉलेज, and then luckily I got it in MMK, so again I was back in Bandra. So where do you go out to party in Dadar, in and around Dadar, if at all? Oh God, शिवाजी पार्क। ग्राउंड डीजे लगा कर गणपति type stuff. So all my school friends and I are very house party type of people. Okay. So my school friends and I hang out at Shivaji Park because none of us are really like those like go out and party kind of people. If at all, house parties is our thing. But farthest we've gone to is Lower Parel because Kamla Mills के यहाँ जो भी सारे restaurants है and all of that, we explored that, or Phoenix. But otherwise, it's somebody's house, mostly mine, because I love being a host. Sunday is going to set. This view is beautiful. Yeah. Some of which you can enjoy from my house. Down this road is the most talked about vada pav in this video. Oh, the Ashok Vada Pav. So we're Okay. going to go. The plan is that we go there, Okay. pack some vada pavs for ourselves. Right. आराम से मेरे घर पे बैठ के वड़ा पाव खाएंगे और सनसेट एंजॉय और करेंगे. sunset enjoy. ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह, अच्छा ना? ऐसे लग रहा है। As much as I loved exploring Dadar, I love the vibe of your house and that pretty view. Thank you. So this is one of the oldest vada pav places, right? Yes, and of course, as you must know already and can see and are eating, ये चूड़ा भी डालते हैं अंदर, सिर्फ वड़ा नहीं देते हैं. I'm sure there are going to be a lot of comments on our hair. For sure. How do you manage your curly hair? From one curly haired girl to another. This is truly curly tails. To be very honest, I used to take pride in the fact कि कुछ करना नहीं पड़ता. Seriously, मुझे तो बहुत अच्छे लगते You हैं know, ऐसे because we don't have to rough comb our hair and all of Yeah. that. But it's only when I started working in this industry that I realized that you need to do a lot of work on your hair in order to make it look as magical as that. You must know because we just spoke about how much time she spends on just her hair. You mentioned how this industry is quite demanding, and some of your recent work includes working with Kajol, and you are amongst one of the few lucky actors to work with Irfan Khan too. How was your experience working with Irfan Khan and also Kajol? Irfan Khan is, well, it's sad to say was, but I can't even get myself to say was.
but he had this childlike energy and always very, very curious to know new things, wants to explore new things. If I'm not wrong, he was just going to start shooting for a web show or a film or something of the sort right after Karwa, and he was very intrigued by this entire space that was so new for him, and nothing stopped him. He was always ready to learn, which was so endearing about him. Kajol to matlab, she is to literally someone I've grown up watching, because I am a 90s baby and she was the reigning queen of the 90s. तो I was like, पता नहीं अभी कैसे मैं इनके साथ एक्टिंग कर लूँगी, but she is amazing. She is not the least bit intimidating as I felt. I didn't assume these things about her, but I felt intimidated because it's her. It's somebody I've grown up watching. And the minute I met her, everything just vanished. She has the most infectious laughter, and there's very little difference in her on-air and off-air personality, right? Yeah, she wears her heart on her sleeve. She is who she is. It's not like मतलब आपके face पे कुछ और है, behind your back कुछ और है. She speaks her heart out, and she's very honest. She's very genuine in that sense. So Mithila, since last night I've been humming the Marathi song that you've sung on your YouTube channel. Can you please sing that for us as we wrap the show? Of course. इथं कुणी आसपास ना, डोळ्याच्या कोणात हासना, तू जरा माझ्याशी बोल ना, ओठाची मोहर खोलना, तुला गबग जाता मग वळून पाहता वाट पावला तड खेळली, जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिण सळसळली, ही चाल तुरु तुरु उडती केस भुरु भुरु, डाव्या डोळ्यावर बट ढळली, जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिण सळसळली. म्यूजिक साथ में बड़ा चल गया. बात करें तो दादर जो है हमने पहले बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन दादर को हमने आज तक बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर नहीं किया. दादर स्टेशन के बारे में हम लोगों ने सुना है, लेकिन जो जोक है बीच में दादर स्टेशन के बारे में, डर के आगे जीत है, दादर के बाद सीट है. मतलब इतना ज्यादा रश वहां पर होता है. बट हाँ, मुझे एक चीज लगती है, मुझे लगता है कि और ज्यादा एक्सप्लोर हो सकता था. मुझे लग रहा था कि बहुत सारी और जगह हम लोग घूमेंगे, बट ये कि जो भी गलियां हम लोगों ने देखी, सड़कें देखी, बाजार जो थोड़े बहुत हमने क्लिप देखे, उसको देखकर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. बेसिकली अगर बात करें ना, यहाँ पर उन्होंने एक दादर का जो ओवरव्यू है ना, वो हमें दिखाया भी. इंटरनल उसके जो चीजें वो हमें देखने को नहीं मिली. मे भी हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में हो. लेकिन बात करें यहाँ पर जो है एक्ट्रेस की, उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने वाकई अपने एरिया की चीजों का बहुत अच्छी तरह पता है. अगर मैं अपने इलाके की चीजों की बात करूँ, या ये अपने इलाके की चीजों की बात करें, इन्हें तो मुश्किल में तो फिर भी पता होगा. हाँ, वही ना, मुझे फिर भी आइडिया होगा, इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा. मेरे से कोई पूछेगा ना तो मैं कहूँगी अच्छा ऐसा नहीं, इन्हें कॉल अ फ्रेंड ऑप्शन है. नहीं, मैं कॉल अ फ्रेंड में कॉल टू मौसम ऑप्शन, क्योंकि मैं अपने घर में उसी का नंबर लगाना चाहती हूँ. बट ये कि अगर हम साउदाना के बारे में बात करें तो उसके बारे में हम लोगों को पहले पता था, उस डिश के बारे में जो मिसल था. वैसे मिसल जब उन्होंने बोल भी रही ना मिसल, तो मतलब मिसल पाव मतलब सुना हुआ था, लेकिन ये मिसल कह रही थी तो इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था क्या. लेकिन उसको अभी भी देखकर मुंह में पानी आ रहा था. मतलब प्याज पता नहीं क्यों ऐसी चीज है कि उसको देखकर मुंह में पानी आ रहा था. नहीं, ऊपर से प्याज भी और जो नींबू डाल के उन्होंने बनाया ना, तो वो नींबू का एक अलग मजा और टेस्ट जो आता है ना, वो आता है. लेकिन मतलब मुझे तो प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्ची देखे तो मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है भाई. अब क्या बात है, मैं क्या कह सकता हूँ. सही बात है आपका. लेकिन और अगर मैं वीडियो की बात करूँ ना, तो जिस तरह उन्होंने चीजें दिखाई, छोटी छोटी मार्केट्स जो हमने 2-3 देखी, वो भी बहुत अच्छी थी. अच्छा, एक चीज जो है, तेज इंसान जो चलता है ना, उसके साथ चलने में मुझे भी बड़ी दिक्कत होती है. मैं पीछे रह जाता हूँ, वो आगे चला जाता है. लास्ट में मेरे साथ हुआ, मैं एक दोस्त के बाहर गया था, उसके साथ तेज चलने की आदत है, वो मेरे थोड़ा सा दूर गया. मैंने कहा भाई मैं तेरे साथ है, मेरे साथ लेकर चल. तो मैं आगे तो तेज चलना, तुझे कौन कह रहा है आराम से चल.
इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए कि बंदा कहे भाई अब क्या, मतलब मैं क्या किसी के साथ थोड़ा तेज वाकई में चलना भाई इतना तेज भी नहीं होना चाहिए कि क्या नाम लेते हैं चलते चलते आपको सांस चढ़ जाए। हाँ वैसे इतना तेज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट कर रहे हो, आप वहाँ पर रेस लगाने नहीं आए, तो जो लोग ऐसा करते हैं पता चले तेज चलते जा रहे हैं, सामने से एसी का आउटडोर लग गया है। अच्छा लेकिन वैसे ना ये मुझे नहीं पता था दादर इतना बड़ा है, यानी जिस तरह से हम लोग वीडियो में देख रहे थे, मुझे ऐसा लगता था कि ना मतलब जो मेरे दिमाग में चीजें चलती हैं मुंबई है, लेकिन मुंबई के अंदर भी जो जगह है वो इतनी बड़ी है, यहाँ पर तो इतनी सी जगह है जल्दी से खत्म हो जाती है, मतलब है ना। नहीं वैसे अगर मुंबई की बात करें तो मेरा ख्याल है कि अगर उधर अगर हम हमारे मुताबिक छोटी छोटी कॉलोनीज की बात करें ना वही बहुत बड़ी होती है। जैसे अगर हम धारवी की बात करें, देखने में तो छोटी सी लगती है लेकिन वो कितनी बड़ी कॉलोनी है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता था, मेरे को नहीं पता था। अच्छा था क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली ऐसा होता है कि लाहौर अब इतना बड़ा नहीं है, अब तो पहले से बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारी जगह उसमें ऐड हो गई हैं। लेकिन जब मैं ऐसे मतलब कोई शहर देखती हूँ, स्पेशली अभी मैं मुंबई के बारे में बात करना चाहूंगी, मुझे लगता है जिस तरह से हम लोग दादर देख रहे हैं, आधा लाहौर तो मुझे लग रहा है इसी में हम लोगों का चला गया है क्योंकि काफी जगह थी और मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारी और जगह भी होंगी इसमें जो कि नहीं दिखाई। अच्छा एक और जो उन्होंने ड्रिंक पिया था जिसका पीयूष नाम था, वो पता नहीं क्या चीज थी, वो कैंडी के टेस्ट करता है। हाँ टेस्ट श्रीखंड जैसा करता है, लेकिन हमें तो मैंगो लग रहा था ना। हाँ मुझे तो मैंगो लग रहा तो इस वजह से जो है ना हमें नहीं मालूम सही तरह वो है क्या, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने छोटी छोटी खाई थी ना वो भी पता नहीं क्या थी हमें कुछ नहीं पता कि वो क्या था। हम सिर्फ देखकर ये कहते जा रहे थे बहुत मजा आ रहा है। और वाकई में वैसे जब आप चीजें देखते हैं ना तो आपको पता, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगी और वो है कि जितने भी हम लोग रेस्टोरेंट देखते हैं, चाहे वो ओल्ड स्टाइल के हैं या वो बहुत टाइम के हैं, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि उसमें जो भी बर्तन वगैरह आते हैं वहां पे काफी ज्यादा मतलब हाइजीन है वो, और बहुत चमक नजर आते हैं। मैं समटाइम सीरियसली सोचती हूँ, मैं यहाँ पर ज्यादातर जो अगर हम बाहर का खाने की बात करें और जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, यानी कि जो बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, उनके बारे में बात करूं तो मैं सिर्फ इसी वजह से नहीं खा पाती क्योंकि वहां पर जो बर्तन है ना वो मुझे कभी साफ ज्यादा उन पे खराशें पड़ी होती हैं। नहीं स्क्रैचेस एक अलग बात है, लेकिन एक शक्ल से भी पता चलता है कि ये साफ है, ये जगह साफ है। हम लोग यहाँ पर मैंने मतलब जितने भी रेस्टोरेंट्स देखती हूँ मैंने ये चीज नोट की है कि ये टेबल्स आपको साफ नजर आती है, इवन के लोग बैठे होते हैं, मतलब और जो इंटीरियर होता है वो भी बता रहा होता है कि ये काफी पुराने स्टाइल का एक रेस्टोरेंट है। सो गाइस ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी। दादर से कौन कौन है जरूर बताइएगा, और क्या क्या खाने को मिलता है दादर में, और कोई ऐसी वीडियो जिसमें दादर को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया गया हो हम जरूर देखना चाहेंगे। अच्छा एक और चीज की तारीफ भी करना चाहेंगे जो कि हम भूल गए, उनके घर की, उनका घर भी बहुत खूबसूरत था और जिस तरह उनके घर के बालकनी से व्यू था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। शाम हो या बारिश हो रही हो, आप उधर बैठे हो तो आपको बहुत रिलैक्सिंग आप फील करेंगे। अच्छा वैसे मैं एक बात बोलूं, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, जो लोग घरों में रहते हैं ना उनको फ्लैट में रहना थोड़ा अच्छा लगता है, और जो लोग फ्लैट में रहते हैं ना उन लोगों को घरों में रहना अच्छा लगता है। घरों का फायदा ये होता है कि आपकी अपनी छत होती है, ऊपर नीचे कहीं पर भी जब मर्जी जाए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को क्या अट्रैक्ट करता है फ्लैट्स के बारे में कि वहाँ की बालकनी और टेरेस वगैरह ये बड़े अच्छे लगते हैं। अरे लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि घरों का फिर भी मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा होता है। घर का देखिए घर का एक अपना मजा है, आप वहाँ पे अपने तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। फ्लैट का एक अपना मजा, वहाँ पे आप अलग तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और एक बंदे एक चीज अच्छी लगती है कि वहाँ पर ना बड़ी मतलब उनकी जो वेंटिलेशन का सिस्टम बड़ा अच्छा रखा। बंदे के पास एक घर भी होना चाहिए, एक फ्लैट भी होना चाहिए, जब दिल किया फ्लैट चला गया, जब दिल किया घर आ गया। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, घर बनाने आसानी है। देखिए यहाँ पे अगर फ्लैट होगा भी ना तो रावी व्यू आएगा, जो है सी व्यू नहीं आएगा। रावी में भी कुछ नहीं। वही ना। Anyway guys, ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें एंड कीप अस इन prayers till then. Goodbye.